Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fizzah Naqvi, Assistant Professor of Chemistry at Government Degree Girls College, Al-Noor. Today I am giving a lecture about ionic bond. This topic is in chapter number 4 of first year chemistry. Ionic bond, what does it mean by ionic bond? Ionic bond is that type of bond which is formed by the complete transference of electron between atoms, or this bond is also called electrovalent bond because this bond is formed due to the electrostatic force of attraction between positive ion and negative ion. This form that is ionic bond formed between metal and non-metals. Metal belong to the group usually from 1A, 2A and 3A, and non-metals belong from 6A group and 7A group. The metals have high electronegative value and non-metals have low electronegative value. So the difference of electronegativity exists in ionic bond should be greater than 1.7. Those compounds which have ionic bond are called ionic compounds. For example, NaCl, sodium chloride, calcium carbonate, NaOH, and MgSO4, magnesium sulfate. स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड NaCl की एग्जाम्पल डिटेल में आपके कोर्स में शामिल है. सो हम भी सोडियम क्लोराइड के ही बारे में थोड़ा सा तफसील में पढ़ेंगे कि सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और क्या एनर्जेटिक्स प्रोड्यूस होते हैं जब वो बॉन्ड बनाता है. NaCl की फॉर्मेशन के बारे में समझने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. इट डिपेंड्स ऑन सम मल्टी स्टेप रिएक्शन. द स्टेप नंबर 1 फॉर दिस फॉर्मेशन इज फॉर्मेशन ऑफ Na positive sodium ion. Sodium has 11 electron and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. From the electronic configuration, it clearly shows that sodium has only one electron in its outermost shell, and sodium wants to attain stability and complete its octet. So sodium wants to lose its electron to gain stability or complete its octet. Now the electronic configuration after releasing of electron, sodium has 1s2, 2s2, 2p6, and sodium. That's why sodium produce +1 charge. The second step is that formation of chloride ion from chlorine atom. Chlorine in its ground state has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. From the outermost shell, the electronic configuration shows that chlorine has 7 electrons and chlorine form its octet complete. So chlorine wants one more electron to complete its octet, and now chlorine after receiving an electron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. After receiving electron, chlorine atom has a negative charge on it. So the formation of NaCl clearly shows that Na plus ion react with Cl minus ion to form sodium chloride, that is NaCl. The concept or transference of electron in ionic bond in the example of NaCl can be understood in this picture as sodium atom has one electron in its outermost shell. This electron goes to chlorine atom because chlorine wants to take only one electron to complete its octet. By giving electron, sodium has positive charge, and by receiving electron, chlorine has negative charge. This is the complete formation of sodium chloride. The energetics of the formation of NaCl or sodium chloride in this era or in this topic we can understand some terminologies also.
Like for example, formation of sodium ion occurs in this clearly in this manner as lose one electron to complete its octet and wants to take or the first step in energetics of NaCl can be understood by stepwise method. The first step is that formation of sodium ion. In this method, sodium loses one electron and also and also gain energy, which is plus 495 kilojoule per mole energy. The amount of energy which is required to lose an electron is called ionization potential energy, and in the formation of sodium ion, this ionization or IP value is plus 495 kilojoule per mole. The second step, formation of chloride ion. In this step, chlorine atom receives electron and forms Cl minus ion, and the amount of energy which is released during receiving of electron to complete its octet is called electron affinity, and the value of electron affinity for the formation of chloride ion is minus 348 kilojoule per mole energy. The overall energetics of sodium chloride can be understood in this way. In the first step, energy is absorbed. स्टूडेंट आप यूं भी कह सकते हैं, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस सूरत में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और वो कितनी होती है? 495 किलोजूल पर मोल एनर्जी. इसी तरह दूसरे स्टेप में जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है और तो वो एनर्जी निकालता है, और वो कितनी एनर्जी लगती है, वो निकलती है, वो होती है 348 किलोजूल पर मोल एनर्जी. सो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा खर्च हो रही है, इलेक्ट्रॉन लेने में, रिसीव करने में कम एनर्जी का अमाउंट रिलीज हो रहा है, लेकिन ये तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 147 किलोजूल पर मोल एनर्जी. हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी का रिलीज होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, लेकिन प्लस 147 किलोजूल पर मोल एनर्जी शोज करती है कि ये एनर्जी का रिलीज नहीं हो रहा, बल्कि एनर्जी मजीद चाहिए इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए. लेकिन एक्चुअली पिक्चर में क्या है, असल में क्या होता है, ये हम अब आगे पढ़ते हैं. सोडियम क्लोराइड के अंदर जब आयंस का कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होते हैं, आयंस मिलते हैं, जिसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बनता है, तो यहाँ पर असल में माइनस 788 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज ही होती है. हालांकि हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि 147 प्लस किलोजूल एनर्जी मजीद चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर रिलीज हो रही है. बेसिकली ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है क्रिस्टल लैटिस एनर्जी. ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को बनाने में रिलीज होती है. यानी जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलते हैं तो वो क्रिस्टल बनाते हैं जो क्यूबिकल शेप का होता है, और ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि माइनस 788 किलोजूल पर मोल एनर्जी है, ये रिलीज करता है. अब ये एनर्जी का फर्क क्यों आ रहा है और इसकी क्या वजह है, इसको समझने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि एक क्यूबिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न. इसके अंदर एक आयन 6 मुख्तलिफ तरह गहराव के साथ 6 डिफरेंट साइड से सराउंडेड होता है अपोजिट चार्ज आयन के साथ. जैसे सोडियम, एक सोडियम एटम 6 साइड्स क्लोराइड आयन से सराउंडेड होगा, एक क्लोराइड आयन 6 साइड सोडियम के साथ सराउंडेड होगा. क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाउंड होते हैं, तो इसलिए इनके दरमियान जो एनर्जी का लॉस होता है वो माइनस 788 होता है, जो एनर्जी हमें 147 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, ये लॉस उसको बैलेंस कर देता है, कंपनसेट कर देता है. इसी वजह से सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एक कंप्लीट
स्टेबल कंपाउंड है और बेहतरीन मिसाल है आयनिक कंपाउंड की. I hope student all of you understand all these about all this about ionic compound and ionic bond. So that's all for today and thank you so much.